You know by now that there are many bones in our body. So far we were studying the bones based on their location. जो center में है वो axial skeleton, जो side में है वो appendicular skeleton. But now for some time we will study the bones, or we will study the skeleton based on its shape. उसके शेप के आधार पर, शेप के बेसिस पर हम बोन्स को अभी स्टडी करेंगे. अब तक हम लोकेशन के बेसिस पे करते थे. सेंटर में एक्सियल स्केलेटन, जो बोन साइड में है वो अपेंडिकुलर स्केलेटन. बट नाउ वी विल स्टडी बोन्स बेस्ड ऑन देयर शेप. So let us start. There are some bones which are long, like the bone of the arm. This bone is called as humerus. So there are some bones which can be long. They're called as humerus. There are some bones which can be flat. Flat माने चपटा होता है. Okay, look at this. यहाँ का बोन जो हमारा चेस्ट में था ना आगे, जहाँ पे रिब्स कनेक्ट होते थे रिब केज में, this bone is called as sternum and it's a flat bone. So there are some bones which can be flat. Example, sternum. Now there are some bones which are irregular, जिसका कोई ठीक से शेप नहीं होता है. ये हमारा वर्टिब्रा. वर्टिब्रा माने the bones of the backbone. Okay. जब एक होता है तो वर्टिब्रा कहते हैं, बट जब बहुत सारे होते हैं तो आगे प्लूरल है तो एस नहीं लगाते, यहां पे एस की जगह पे ई लगाते हैं, वर्टिब्रे कहते हैं. सो रिमेंबर, वर्टिब्रा इज सिंगुलर, एक बोन को कहते हैं, पर बहुत सारे बोन्स को कहते हैं वर्टिब्रे. ओके, एंड देन the bones which are located in our hands, okay, the ones which I have shown you here, these bones and these bones based on the shape they are called as short bones. Short bones. Example, carpal meaning the bones of the hand. Okay, and the long bone, this bone, humerus, is the bone of the arm. There are other pictures also over here. You can see them for your general knowledge, extra knowledge, but you don't have them in detail. With that, students, we are done with the study of bones based on its shape. Now, because we are studying bones from a long time, मैं कब से आपको बता रहा हूँ कि हमारा बॉडी को प्रोटेक्ट करने वाला है, हमारे बॉडी के इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स का जो हार्ड कवरिंग है वो बोन्स है. जैसे टेलीविजन के लिए उसका जो कार्टन बॉक्स है, मोबाइल के लिए जो उसका कवर है, सिमिलरली हमारे बॉडी के इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स के लिए बोन है, स्केलेटन है. देन यू मस्ट बी थिंकिंग कि वो जो कार्टन है, जो बॉक्स है, वो तो कार्डबोर्ड का बना है, तो हमारा बोन्स कैसा बना है. सो नाउ आई विल ट्राई टू शेयर विथ यू स्टूडेंट्स हाउ डू बोन्स लुक. ये बोन किससे बना है. ओके स्टूडेंट्स, यू नो दैट ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ सेल्स. कोई भी लिविंग थिंग है वो सेल्स से बना है. ओके, पॉइंट नंबर 1, बेसिक.
living things are made up of cells. तो सिंपल है, बोन्स भी लिविंग थिंग्स का पार्ट है, हमारे बॉडी का पार्ट है, तो बोन्स भी किससे बने होंगे? सेल्स से. सो द बोन्स आर ऑल्सो मेड अप ऑफ cells. Now, students, please try and understand the next point. When we study the bone under a microscope in detail, we see that the bones, that any bone is made up of two parts. One part is called as a living part and one part is called as a non-living part. The living part of the bone is called as bone cells. You know student, cells are living. Okay? तो bone cells से ही बना होगा. So bone cells are living. But bone is also made up of some non-living part, and this non-living part is called as calcium, phosphorus, etc. Okay, so why are bones very strong? Because of calcium. It is calcium which gives strength to the bones. It is calcium which makes the bones hard. Okay, I have one picture to show you this. It's not a very easy picture, but if this is a bone, and can you see with the help of this arrow, you understand that if I look at a bone under a microscope, you know, because सेल्स आर वेरी स्मॉल, हम उसको डायरेक्टली नहीं देख सकते, तो हम उसे माइक्रोस्कोप के जरिए देखते हैं, माइक्रोस्कोप की मदद से देखते हैं. सो व्हेन यू स्टडी बोन्स विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप, यू सी दैट दिस इज अ बोन सेल, so that is a living part. Okay, these are the bone cells. But can you see in between this light yellow, light yellow, light yellow? The light yellow part is calcium and phosphorus. Okay, in difficult words it's called as matrix, but this word will come to you in 10th standard. Right now remember, bones are made up of two parts, the living part and the non-living part. The living part are called as bone cells and the non-living part is called as calcium and phosphorus. And what do bones do? Why do we need bones? By now I am sure you know the answer for this. Bones, what is their function? So we go on to the functions of bones. And the answer is they help us in protection. They give shape to our body. सोचो स्टूडेंट्स, अगर हमारे में बोन्स नहीं होता तो हमारा बॉडी ऐसा फोल्डेबल होता. ओके, टुडे वी नीड अ बेड टू स्लीप. हमें सोने के लिए एक बिस्तर चाहिए. इफ वी डिडंट हैव बोन्स, आवर मदर कुड हैव फोल्डेड अस. हम ऐसा कपड़े की तरह फोल्ड करके ड्रॉर में रख सकते थे. So bones are very important in giving shape to our body. And with that students, we are done with the study of bones and skeleton. And now we come to the last part of the chapter, that is the study of the skin. So let us come on the flip chart and understand about skin. Students, where do you see skin? You see skin here? Yes. You see skin here?
Yes. You see skin here? Yes. You see skin everywhere. So, point number 1, skin forms the outer covering of our body. Is it so simple? And skin is everywhere. You know, I will tell you a wonderful general knowledge point. Okay? हमारे बॉडी में इतने सारे ऑर्गन्स हैं. अगर मैं आपको पूछूं, if I ask you, students, do you know which is the largest organ in the human body? And you think, and you think, and you think. The answer is the skin is the largest organ of the human body. That's a very important point. Now, our skin, suppose this is my skin and I cut it out. So if this is a person's skin, and if you take this small part and you study this under a microscope, you realize that the skin has got 1, 2 and 3 layers. Basically, our skin has got 3 layers. Look at this picture to understand this. Okay, students, I request you not to look at this side labels because they are not for 6th standard. Look at this side labels. Okay, I told you skin has 3 layers. 1 which is orange in color, 2 which is pinkish in color, and 3 which is again orangish in color. These are the 3 layers. So, the skin is divided into 3 layers. And the 3 layers are, the first one is epidermis. The second one is dermis. And the third one is hypodermis. हाइपो माने बिलो, तो डर्मिस के नीचे है, एंड देयरफॉर इट्स कॉल्ड एज हाइपोडर्मिस. ओके, हम आम आदमी की लैंग्वेज में इसे फैट भी कहते हैं. हम कहते हैं ना, अरे तेरे में बहुत चर्बी है, मतलब इफ समवन इज वेरी फैट, यू टच देयर स्किन इज ऑल्सो वेरी फैट. वाई? क्योंकि उनके अंदर ये जो लेयर है ये बड़ा मोटा होता है, उनमें फैट ज़्यादा होता है, चर्बी ज़्यादा होता है, एंड देयरफॉर दिस लेयर इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ फैट लेयर, एंड दिस लेयर इज ऑल्सो कॉल्ड एज द सबक्यूटेनियस लेयर. हाँ, एक बार मेरे साथ प्रोनाउंस करेंगे माय डियर स्टूडेंट्स. सबक्यूटेनियस लेयर. ओके, पॉज करेंगे स्क्रीन, बैकवर्ड जाएंगे, फिर आगे जाएंगे, डिफिकल्ट वर्ड को मेरे साथ फिर से प्रोनाउंस करेंगे. सो दीज आर द 3 लेयर्स ऑफ द स्किन. प्लीज डू नॉट फॉरगेट epidermis, dermis and hypodermis. Hypodermis also called as fat layer or subcutaneous layer. Now students, apart from this, the skin has got some important organs.
ये 3 लेयर में स्किन के पास कोई कोई इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स होते हैं. ये कौन से होते हैं? स्टूडेंट्स, यू आर अवेयर कि हमें पसीना निकलता है. वी स्वेट, इन इंग्लिश वी से वी स्वेट. वेयर डज द स्वेट कम आउट फ्रॉम? इट कम्स आउट फ्रॉम द स्किन. ओके, कोई ऐसा अंदर से तो बाहर आता नहीं है, स्किन बनाता है. आवर स्किन मेक्स स्वेट, आवर स्किन प्रोड्यूसेस स्वेट. सो वेयर इज द स्वेट प्रोड्यूस्ड फ्रॉम? इन द स्किन there are these organs. Can you see that? I'll show you another picture. It's a good picture. In the skin you find these organs. These are the organs which produce sweat. Okay, छोटे छोटे bags होते हैं जो sweat को बनाते हैं और sweat को बाहर निकालते हैं. See, here the sweat is produced, and can you see with the help of these tubes the sweat is coming out, and this is how we start sweating. Sweat comes out. So now I am teaching you some important organs or some important parts in skin. And the first one is sweat glands. What do sweat glands do? They produce sweat. Okay, now why sweating is important? Student, there are two important roles. First of all, sweat is a way of removing waste products. पसीने की मदद से हमारे बॉडी का जो कचरा होता है, जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं, वो बाहर निकलते हैं. दैट्स नंबर 1. सो स्वेट ग्लैंड प्रोड्यूस स्वेट which helps to remove waste products. And secondly, it has a very important role, students. You know, whenever you go out in the summers, whenever you go out in the afternoon in the heat of the sun, आप गर्मी में जाते हैं तो आपको पसीना निकलता है. क्यों? Because when you go in the heat of the sun, your body temperature increases. Okay, but if the body temperature increases too much, it is not good for our body. So whenever the temperature increases, the skin produces sweat. So when the sweat comes out, स्वेट के साथ साथ द बॉडी टेम्परेचर फॉल्स डाउन. तो स्वेटिंग की वजह से क्या होता है? हमारा बॉडी ठंडा हो जाता है. ओके, तो जब भी गर्मी बढ़ जाती है, बॉडी को ठंडा होना जरूरी है, तभी स्वेट निकलता है. तो जब भी गर्मी बढ़ती है, हमारे स्किन में से स्वेट ग्लैंड्स स्वेट बनाते हैं, और ये स्वेट की वजह से जैसे स्वेट बाहर निकलता है, जैसे पसीना बाहर निकलता है, हमारा बॉडी टेम्परेचर गिर जाता है और वापस नॉर्मल हो जाता है. Which means what's the function of sweat glands is to control body temperature. I hope that is very, very simple for you. Now, apart from this, the last part, the last important organ that I want to cover under skin for you is melanin. Okay, let me give you one example. Students, we all have skin, but you know, some people have very white skin, some people have brown skin, some people have dark brown skin, some people have black skin. You will think ऐसा क्यों होता है? क्या भगवान हमें ऊपर से ऐसा पेंटिंग करके भेजता है हमारे स्किन को? ऐसा तो नहीं होता है. Now, there are certain cells in our body which control our skin color. Okay? Remember, these cells are called as melanin producing cells.
melanin producing cells. Repeat with me the word melanin. Melanin बनाने वाले cells. तो नाम पर से समझ में आता है that these cells, where are they present? They are present in the skin only. They are present here itself. And these cells, they produce a chemical called as melanin. Okay? And it is the melanin which gives color to our skin. So, this is melanin. Okay? When the skin, okay, this is skin, these are the cells of skin, and this is the melanin producing cell. Okay? Which is looking irregular shaped, ऐसा अमीबा जैसा दिख रहा है ये सेल. ये सेल हमारे स्किन में होता है और ये सेल मेलानिन बनाता है. Okay? If the melanin is less, can you read this? Less melanin, the skin will be very white. If the melanin is more, the skin becomes dark, darker, 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 darkest. Okay, so this is how a person in West Indies looks like. This is how a person in Africa looks like. And this is how a person in England looks like. Okay, so remember, next time when you see a foreigner who is white, you go and tell your friends, you know why is he having white skin? Because his skin has no melanin chemical. And next time when you see a person from Africa, a foreigner from Africa whose skin is very dark, go and tell your friend, you know why he is very dark? Because his skin is producing a lot of chemical melanin. Okay, so basically melanin gives color to our skin. Students, on that note, we come to the end of this wonderful chapter about bones, skeleton and skin. I hope I was able to make it simple and easy for you. Thank you so much for paying attention. All the best.